सफ़र शुरू करेगा। उसके बाद वज़ीराबाद में 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आज खान साहब जो हैं उनकी तकरीर होगी और आज का दिन पूरा जो है वो वज़ीराबाद के नाम रहेगा। ये हकीकी आज़ादी मार्च का जो आखिरी मरहला है वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि सोमवार से शुरू होगा और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जब जेहलम में ये कंटेनर दाखिल होगा तो फिर हम वो आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएंगे। आज हम जो है वो अहमद चट्टा साहब के साथ ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है वज़ीराबाद दाखिल होगा तो फिर यहाँ पे आखिरी गुजरावाला ने कल जिस तरह से इस्तकबाल किया, हम गुजरावाला के तमाम शहरियों के शुक्रगुजार हैं। गखड़ मंडी के लोगों ने, सियालकोट के लोग वहाँ पे आए और आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही रवायत वज़ीराबाद बरकरार रखेगा। और आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग अब तक इस मार्च में शरीक हुए हैं, लाहौर से लेके यहाँ वज़ीराबाद तक। और अब इसके बाद भी इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद जो है, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो हमारी यही है कि हम जो मुकामी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लोगों को सिर्फ वो हमारे साथ लॉन्ग मार्च में चलते हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट की हालत ख़त्म हो जाती है तो फिर अगला डिस्ट्रिक्ट जो है उसको टेक ओवर कर लेता है। और फिर इंशाल्लाह जब इमरान खान रवात पहुँचेंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान के जितने लोग इन सारे मार्चेस में शरीक हुए हैं ये सारे लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे, रवात पहुँचेंगे और रवात से फिर हम इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। और इस्लामाबाद में मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम 10 से 15 लाख आदमी जो है वो जमा कर पाएंगे और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमात होंगे जो इस्लामाबाद में होंगे। और यही वो हकीकी आज़ादी की एक जद्दोजहद है जिसमें हर पाकिस्तानी जो है वो शामिल है। सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ किस्म का जो आज शरायतनामा हुकूमत ने पेश किया है कि ये शर्तें मानेंगे तो फिर जो है वो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त होगी। उनमें एक शर्त ये है कि आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक शर्त ये है कि स्टेज के ऊपर 12 लोग होंगे और वो 12 लोग भी इंतज़ामिया तय करेंगे। पहली बात तो ये है, मैं एडवोकेट जनरल पंजाब को कहता हूँ कि आप फौरी तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं इनके दिमागी मुआयने की ज़रूरत है। ये जो इज्तिमा होने जा रहा है ये कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी का इज्तिमा नहीं है कि जिसमें 4 लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। हमारे यहाँ लाखों लोग हैं, उनको हम स्पीकर के बगैर कैसे जो है वो उनसे बातचीत हो सकती है। जो ज़्यादातर शराइत हैं जो हुकूमत ने लगाई हैं वो मज़ाक़ा खेज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अदालतें जो हैं इसको मुस्तरद कर दें। अव्वल तो या फिर हमें करने दें हम जो करना चाहते हैं और दूसरी सूरत में एक अहमकाना कंडीशंस जो हैं वो इम्पोज ना करें। और मुझे उम्मीद है अदालत इसका नोटिस देगी और हमें जो राइट टू प्रोटेस्ट है आर्टिकल 17 के अंदर वो हमें दिया जाएगा और इंशाल्लाह हम ये बड़े इज्तिमात जो है करने में कामयाब होंगे। सूरत हाल इस वक्त जो है वो आप देख ही रहे हैं कि अभी शबाज The look you choose defines what's next. We say hello to the lockdown generation. What's up, say a lot, hon, I ain't I'm out of mission. What's up, getting your health and wellness, I'm out of vision. Job her screen, bitch up, but hang only negative. It's time for us to bring a new perspective. Cause all we wanna do is love and live. Vitamin water. Just got her sip, gives you a twist. Health and flavor in a mix. When you stand out from the rest, go for things like with 7% of vitamins and minerals. Vitamin water, the fizz with an X.
streaming office with Chaudhry. Just download on your PC. तो गाइस ये वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे OBS स्टूडियो को यूज करके अपने पीसी से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे अपने एंड्रॉइड के स्क्रीन को अपने एंड्रॉइड के डिस्प्ले को मिरर कर सकते हो अपने पीसी पे विद ऑडियो। तो ये वीडियो समझ लो उस वीडियो का अगला पार्ट है। तो गाइस ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे OBS स्टूडियो को यूज करके अपने पीसी से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे अपने एंड्रॉइड के स्क्रीन को अपने एंड्रॉइड के डिस्प्ले को मिरर कर सकते हो अपने पीसी पे विद ऑडियो। तो ये वीडियो समझ लो इस वीडियो का अगला पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे OBS स्टूडियो यूज करके लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो यार ये वीडियो को एंड तक जरूर देखो और छोटी-छोटी सारी स्टेप्स को अच्छे से देखो। अगर आप लोग सही से वीडियो को नहीं देखते हो तो फिर आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हो। आप लोग कमेंट करके बोलते हो भाई आवाज़ नहीं जा रही है, भाई वीडियो नहीं आ रहा है। फिर सारी स्टेप्स को ध्यान से देखो, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, मेरा मुंह पहली बार देख रहे हो, आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो इससे ज़्यादा ये अपना सफ़र शुरू करेगा। उसके बाद वज़ीराबाद में 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आज खान साहब जो हैं उनकी तकरीर होगी और आज का दिन पूरा जो है वो वज़ीराबाद के नाम रहेगा। ये हकीकी आज़ादी मार्च का जो आखिरी मरहला है वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि सोमवार से शुरू होगा और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जब जेहलम में ये कंटेनर दाखिल होगा तो फिर हम वो आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएंगे। आज हम जो है वो अहमद चट्टा साहब के साथ ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है वज़ीराबाद, यहाँ पे हैं। गुजरांवाला ने कल जिस तरह से इस्तकबाल किया, हम गुजरांवाला के तमाम शहरियों के शुक्रगुजार हैं। गखड़ मंडी के लोगों ने, सियालकोट के लोग वहाँ पे आए और आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यही रवायत वज़ीराबाद बरकरार रखेगा। और आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग अब तक इस मार्च में शरीक हुए हैं, लाहौर से लेके यहाँ वज़ीराबाद तक। और अब इसके बाद भी इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद जो है। हमारा जो स्ट्रेटजी है वो हमारी यही है कि हम जो मुकामी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लोगों को सिर्फ वो हमारे साथ लॉन्ग मार्च में चलते हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट की हालत ख़त्म हो जाती है तो फिर अगला डिस्ट्रिक्ट जो है उसको टेक ओवर कर लेता है। और फिर इंशाअल्लाह जब इमरान खान रवात पहुँचेंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान के जितने लोग इन सारे मार्चेस में शरीक हुए हैं ये सारे लोग इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे, रवात पहुंचेंगे और रवात से फिर हम इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। और इस्लामाबाद में मुझे इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम 10 से 15 लाख आदमी जो है वो जमा कर पाएंगे और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमात होंगे जो इस्लामाबाद में होंगे। और यही वो हकीकी आज़ादी की एक जद्दोजहद है जिसमें हर पाकिस्तानी जो है वो शामिल है। सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ किस्म का जो आज शरायतनामा हुकूमत ने पेश किया है कि ये शर्तें मानेंगे तो फिर जो है वो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त होगी। उनमें एक शर्त ये है कि आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक शर्त यह है कि स्टेज के ऊपर 12 लोग होंगे और वो 12 लोग भी इंतज़ामिया तय करेंगे। पहली बात तो ये है, मैं एडवोकेट जनरल पंजाब को कहता हूँ कि आप फौरी तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं इनके दिमागी मुआयने की ज़रूरत है। ये जो इज्तिमा होने जा रहा है ये कोई नून लीग का या पीपल्स पार्टी का इज्तिमा नहीं है कि जिसमें 4 लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। हमारे यहाँ लाखों लोग हैं, उनको हम स्पीकर के बगैर कैसे जो है वो उनसे बातचीत हो सकती है। जो ज़्यादातर शराइत हैं जो हुकूमत ने लगाई हैं वो मज़ाक़ा खेज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अदालतें जो हैं इसको मुस्तरद कर दें। अव्वल तो या फिर हमें करने दें हम जो करना चाहते हैं और दूसरी सूरत में एक अहमकाना कंडीशंस जो हैं वो इम्पोज ना करें। और मुझे उम्मीद है अदालत इसका नोटिस देगी और हमें जो राइट टू प्रोटेस्ट है आर्टिकल 17 के अंदर वो हमें दिया जाएगा और इंशाल्लाह हम ये बड़े इज्तिमात जो है करने में कामयाब होंगे। सूरत हाल इस वक्त जो है वो आप देख ही रहे हैं कि अभी शहबाज शरीफ जो है वो पूरा जहाज़ भर के
PIA का एक पूरा जहाज जो 777 था उसको सरकारी तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ डिक्लेयर किया गया, उसके लाखों डॉलर जो हैं वो अदा किया गया किराया, उसके ऊपर 43 लोग जो हैं वो चाइना चले गए और चीन से जो कल वापस आए हैं तो इनके मुंह इतने लटके हुए हैं कि वहाँ से देखिए मिल ही नहीं सकता। ये मसला पाकिस्तान और चीन का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया का नहीं है। ये जो इनके दौरे नाकाम हो रहे हैं वो क्यों नाकाम हो रहे हैं? कोई भी हुकूमत जिसमें थोड़ी सी भी अकल है वो क्यों एक ऐसे वज़ीर आज़म के साथ जो है वो बैठेगी और बात करेगी जिसका टेन्योर उनको नहीं पता कि अगले 15 दिन वो है या नहीं है? कोई हुकूमत कैसे उस गवर्नमेंट के साथ काम करेगी जिसका उसको पता है कि इसमें अहलियत ही नहीं है कोई फैसला इम्प्लीमेंट करने की? जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने और कम करने के लिए भी आर्मी चीफ की एक्शन की मोहताज है, तो कौन उस हुकूमत के साथ काम करेगा? तो ये जो दौरा चीन नाकाम हुआ है ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो होना ही था, सामने सामने नजर आ रहा था। और ये सारे सैर के लिए गए थे और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से पाकिस्तान से एक पूरी जो फोर्स है वो कुक और सर्वर्स भी यहाँ से पाकिस्तान से साथ गए। इस तरह से ये मुल्क चला रहे हैं, एक जिस तरह मजाका खेज ये रवैये हैं इनके, उसके ऊपर ऐसा तो पाकिस्तान में पता नहीं, ये बिल्कुल ही इन्होंने बना लिया है कि कोई मोहम्मद शाह रंगीला ही पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त तो, और किसी को नहीं समझ आ रही। सारा इस वक्त आप अंदाज़ा सिर्फ जो इस्लामाबाद में बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सिर्फ कोई लिस्ट ही बता दें कि अब तक इनके गुजरा के दौरे कितने हुए हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इस वक्त तकरीबन ये जो नाम नेहाद पार्लियामेंट बैठी हुई है जिसमें अपोजिशन ही नहीं है, गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट, इसके एवरेज इस वक्त मेरा ख्याल है 80% जो MNAs हैं वो बैरूनी दौरों के ऊपर हो चुके हैं। ये जो आपकी कैबिनेट है इसमें से कोई वजीर शाहजो नादर इस्लामाबाद हो तो हो, वरना ये कहीं ना कहीं जो है वो चले ही रहते हैं। अभी भी आप देख लें लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं और आप अंदाज़ा लगा लें मुल्क को जो है ये कैसे चलाया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर इस वक्त तक 23 केसेस जो हैं इन्होंने किए हैं। ये खुद एक आलमी रिकॉर्ड है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर केसेस जो हैं किए जाएँ। केसेस क्या हैं? इन्होंने 144 की खिलाफ वर्जी की, इन्होंने फलानी जज साहबा की तौहीन कर दी थी उसके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दो, इन्होंने फलानी जगह ये कह दिया था उसके ऊपर ये लगा दो। 23 केसेस इस वक्त इमरान खान के ऊपर हैं और बाकी भी सारी लीडरशिप के ऊपर सब के ऊपर जो है वो मुकदमे किए गए हैं। और इनका ख्याल है कि इस तरह से करके इस तरीके से चल रहे हैं कि कोई, और रात को राना सनाउल्लाह कह रहा है कि मुझे मेंगल साहब कह रहे हैं जी हम इन्हें मत जेल में रखेंगे। मैं इस पर भी बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जो सारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनका तो अलायंस है ही है इस हुकूमत में। यानी अगर आपने पाकिस्तान में करप्शन को तस्वीरों में बयान करना हो तो इस हुकूमत में शामिल जमातों के लीडरों के चेहरे लगा दें और तो वो रिश्वत की एक आपको तस्वीर मिल जाएगी। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ, जिन्होंने सारी उम्र, आधे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की फौज का डरावा दे के लंदन में, हॉलैंड में, फलानी जगहों के अमेरिका में अपनी नेशनलिटीज़ ले ली हैं, वो भी इमरान खान के खिलाफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है इमरान खान पाकिस्तान में वाहिद वफाकी लीडर है। इमरान खान पाकिस्तान में वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को जोड़ता है, चाहे वो चागी के पहाड़ हो या खैबर का मैदान या कराची हो या लाहौर। एक ही लीडर है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में क्रिकेट लोगों को जोड़ती है या इमरान खान जोड़ता है। ये दो ही फैक्टर हैं पाकिस्तान में जो कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। और ये एलिमिनेट हो जाए, PTI कमज़ोर हो जाए तो फिर ये फौज से भी निबड़ लेंगे, फिर ये पाकिस्तान से भी निबड़ लेंगे। लेकिन हमारा इंशाल्लाह इरादा यही है। ये जो बातें अभी ज़्यादा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुने तो लगता यूँ है कि वो पाकिस्तान जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और 7 न्यूक्लियर ताकतों में शामिल है, वो उसका वज़ीर दाखिला नहीं है बल्कि कोई घंटा घर का बदमाश है। वो वैगाबॉन्ड, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, राना साहब उनमें से एक है। कुछ लोगों के लिए कुर्सियां नीचे आती हैं, वो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे आई हैं, ये ऊपर नहीं गए, या कुर्सियां नीचे कर दी गई हैं इन छोटे लोगों को उनके ऊपर बैठा दिया जाए और ये ऊपर नहीं गए, इनकी ज़हनी हालत ऊपर नहीं गई।
इनकी किरदार, इनके अल्फाज बिल्कुल एक पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को जो एक दुनिया में आलम इस्लाम की वाहिद उम्मीद है, उसको सूट नहीं करता कि ये कोटरी जो है वो पाकिस्तान पे हुक्मरान हो। इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा लॉन्ग मार्च का मरहला है ये कामयाबी से चल रहा है, लाखों लोग इसमें शामिल हैं और इस हुकूमत के दिन थोड़े हैं। जो कल खान साहब ने कहा था ना कि मैं 10 महीने तक चला सकता हूँ, वो सवाल ये था कि ये अगर यहाँ पे ना हुआ तो फिर उन्होंने कहा मेरे पास तो 10 महीने का स्टेमिना है, इनके पास 10 दिन नहीं ठहरा जाना, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है उसका नहीं आया। इंशाल्लाह इस हुकूमत की मियाद 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं है, 10-15 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। शुक्रिया। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, 1 सेकंड में पहले बात कर लूँ। जैसे कि फवाद भाई ने बात की कि मज़ेका खेज सिचुएशन है और मैं तो वेट कर रही थी कि अगला टिकर आएगा, कि ये लिस्ट भी उन्होंने हमें दे दी है इंतज़ामिया ने कि ये बंदे और इनको ऊपर चढ़ा लें। सबसे मज़ेका खेज सिचुएशन है और इंशाल्लाह हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जितने मर्जी इंतजाम कर लो। This Week in Startups is brought to you by Vanta. Compliance and security shouldn't be a deal breaker for startups to win new business. Vanta makes it easy for companies to get a SOC 2 report fast. Twist listeners can get $1,000 off for a limited time at vanta.com/twist. Embroker's startup insurance program helps startups secure the most important types of insurance at a lower cost and with less hassle. Save up to 20% off of traditional insurance today at This was key to why AOL captured the market. You know, just as a founder, like what were the 2 or 3 things you did so well? Well, a bunch of things. When we started in 1985, only 3% of people were online, and those 3% were online an average of 1 hour a week. So it's pretty early days. And it took us a decade really to finally break through. Most people were kind of skeptical that average people would ever have an interest in getting on the internet. It seems crazy now, but that was the view then. And I think our focus in terms of your question was we wanted to make it really easy to use, really useful, really fun, and really affordable. And that was sort of the North Star that guided all our efforts around software design, subscription pricing, our marketing efforts. How do we make the internet available to everybody? But the first decade was a slog. It was a total slog. Yeah. Total slog. It was there a few times we had to go through layoffs and really hard to raise money. Our first round of venture capital, we raised $1 million. It was, hard to get people to believe in the idea of the internet. Certainly hard to get people to believe in our team and that we'd actually have a shot. So it was like many entrepreneurial journeys, a struggle, and also a little bit more of a struggle because we were starting AOL in Northern Virginia, kind of outside of Washington, D.C. There was really no venture capital there at the time. Most people were reluctant to leave a big company, what seemed like a safe job, to go to a little company that seemed like a risky job. Hard to get people to pay attention. And I think that helped inform some of my thinking and give me a little bit more probably empathy for the entrepreneurs all around the country. I think that in part led to the effort around Rise the Rest and trying to back entrepreneurs everywhere. Yeah, I mean, this actually is the perfect segue because you live this. You were not in Silicon Valley where money flowed much freer. And man, at that time, it was just a different world in terms of the ability to raise capital or convince people to come to a startup. Today, kind of a lot of young people are like, well, that's my default. I want to go to a startup. I want to start a company. You started a fund, I guess, after the big AOL Time Warner merger. You've talked about that for a decade. It's got to be a little annoying to recap that every time you get an interview. So we would do that here. And we've been over it before. But that was the biggest M&A. Actually, is the Twitter purchase a bigger? No, the AOL Time Warner was 50, right? Yeah. No, it was 350. 350 billion. I think it's still the largest merger in history. Yeah. And just briefly, I don't like to really dwell on it, but I think that it's a reminder to entrepreneurs out there that, there's a Thomas Edison quote I love: vision without execution is hallucination. Yes. The idea of those coming together, the leading internet company at the time, we had half all the internet traffic in the United States. Time Warner was the leading cable company with broadband. They had all these brands like HBO and CNN and Warner Brothers and Warner Music and Time Magazine and so forth.
it should have been the perfect company to lead into the future of this digital convergence that was starting to happen, but just couldn't get the right people focused on the right priorities. So ultimately, it came down to execution, which, as you know, is at the core what separates the winners and losers in the world of innovation and entrepreneurship. So in retrospect, there was a big disappointment, but I think, learn some things that hopefully I've been able to apply to some of the things since. I mean, if you look at it, the modern day Disney Corporation and what Amazon is doing with Amazon Prime, what Google is doing with YouTube, that playbook was eventually figured out. I think the problem was you had this incredibly innovative team at AOL who moved quickly, and then you had a media business that just wasn't ready to move quick. They were two different paces. You had people jogging, and then you had sprinters. And sprinters cannot, hang with a bunch of people who are just jogging around a track at a leisurely pace. How much of it was? I think that's fair. I think that's fair. And some of it was different teams, different cultures. I remember being in a board meeting right after we merged, so it would have been over 20 years ago, and realizing that some people in the room were speaking one language, other people were speaking another language. There is this dynamic that you just described between the attackers and the defenders, and entrepreneurs tend to be more in that attacker, what's possible mode, and defenders more in the protect what's there, kind of defend the turf mode. So there are a lot of factors there, and certainly some of the timing in retrospect was not helpful because the merger happened just as the whole .com kind of crash happened. So a bunch of different factors, but live and learn and keep moving forward. Yeah, I mean, one of the interesting things there, and then let's get on to the book and your experience investing in the middle of the country and everywhere outside of the major cities. If you think about these subscription businesses and AOL subscription, ostensibly, people were paying the subscription to hear the modem squeal and connect. But if you were to ask them why they were doing that, it was to get content and community on the other side. And that really has become why people subscribe to, all these other services. So sometimes being early is an asset, I guess, and sometimes being early makes it impossible. And that's part of the art of being an entrepreneur. Yeah. Yeah, absolutely. There's an arc to these things, and you have to keep kind of leaning into the future. And we did that well for a while, but then kind of lost our way. And that created the opening for others to fill that vacuum. And that is sort of the entrepreneurial story. All right, listen, the book's great. And the book is based on you starting the Rise of the Rest venture capital firm, getting a bus, and then deciding you would look at all the entrepreneurial communities or places with entrepreneurial activity. I think that